society. The Kshatriyas are the administrative called, then the Vaishyas are the productive class, and Shudras are the workers' class. These four classes of men are prevalent everywhere under different names because it is created by the original creator. So it is prevalent everywhere. Varnashrama Dharma. Professor Kotaskai, it is interesting that in the opinion of some European and old Russian scholars, this Varnashrama system is a later creation. And if you would read the old text of Vedic literature, you would find a much more simple and agrarian society. It is the opinion of these scholars that the Varnashrama system was introduced in Indian society in the late age of the Vedic era, but not from the beginning. And if you would analyze the only text, you would find that in the old classical India, it was not so prevalent. Srila Prabhupada, as far as we are concerned, it is mentioned in the Bhagavad Gita, Chaturvarnyam Maya Srishtam. The Bhagavad Gita was spoken 5000 years ago, and in the Bhagavad Gita, it is said, this system of the Bhagavad Gita was spoken by me to the sun god. So, if you take a estimation of that period, it comes to 40 million years ago. Can the European scholars track back history 5000 years? Can they go back for 40 million years? You have evidence that this Varnashrama system has been current at least 5000 years. The Varnashrama system is also mentioned in the Vishnu Purana 3.8.9. Varnashramacharavata Purushena Paraha Puman. That is stated in Vishnu Purana. Varnashrama Dharma is not a phenomenon of a historical period calculated in the modern age. It is natural. In the Srimad Bhagavatam, the comparison is given that just as in the body, there are four divisions: the brain division, the arms division, the belly division, and the leg division. So, by nature's way, these four divisions are existing in the social body. There exists a class of men who are considered the brain, a class of men who are considered the arms of the state, a class of men who are called the productive class, and so on. There is no need of tracing history. It is naturally existing from the day of creation. Professor Kotaskai, you have said that in any society there are four divisions, but they are not so easy to distinguish. For instance, you can group together different social classes and professional groups into four divisions in any society. There is no difficulty. The only difficulty is, for instance, in the socialistic society in our country and other socialist societies, how you can distinguish the productive group from the workers. Srila Prabhupada, for example, we belong to the intellectual class of the men. This is a division. Professor Kotaskai, intelligent class, Brahmanas, and you can also put together all the intelligentsia is that department. Srila Prabhupada, yes, Professor Kotaskai, and then the administrative class. Srila Prabhupada, yes, Professor Kotaskai. But who are the Vaishyas and Shudras? That is the difficulty. Because of the others are workers, factory workers, collective farm workers, and so on. So, from this point of view, there is a great distinction, in my opinion, between socialist society and all the societies preceding socialism, because in modern Western society, you can group all the social and professional classes in these particular class divisions: Brahmanas, Kshatriyas, Vaishyas, and Shudras. Intellectuals, productive class, owners of the productive system, factory owners for the instance, and menial workers. But here you have no Vaishyas because you have administrative staffs in factories, and you can call them Kshatriyas. And then there are the Shudras, the workers themselves, but not intimate class. Srila Prabhupada, that is stated, Kalau Shudra Sambhavaha. In this age, practically all men are Shudras. But if there are simply Shudras, the social order will be disturbed. In spite of your state of Shudras, the Brahmana is found here, and that is necessary.
If you do not divide the social order in such a way, there will be choice. This is the scientific estimation of the Vedas. You may belong to the Shudra class, but to maintain social orders, you have to train some of the Shudras to become Brahmanas. Society cannot depend on Shudras, nor can you depend on the Brahmanas. To fulfill the necessities of your body, there must be a brain, arms, a stomach, and legs. The legs, the brain, and the arms are all required for cooperation to fulfill the mission of the whole body. So, in any society, you can see that unless there are these four divisions, there will be choice. It will not work properly. It will be Maya, and there will be disturbances. The brain must be there, but at the present moment, there is a scarcity of brains. I am not talking of your state or my state. I am talking the world as a whole. Formerly, the Indian administration was a monarchy. For example, Maharaja Parikshit was a Kshatriya king. Just before his death, he renounced his royal order. He came to the forest to hear about self realization. If you want to maintain the peace and prosperity of the whole world society, you must create a very intelligent class of men. A class of men expert in administration, a class of men expert in production, and a class of men of work. That is required. You cannot avoid it. That is the Vedic conception. Mukha Bahuru Pada Jaha. Srimad Bhagavatam 11.17.13. Mukha means the face, Bahu means the arms, Uru means the waist, and Pada the legs. Whether you take this state or that state, unless there is a smooth, systematic establishment of these four orders of life, the state or society will not run very smoothly. Professor Kotas, हरे time. कृष्ण Hare हरे Krishna, कृष्ण Prabhu. माता जी Hare Krishna. माता जी Thank बहुत you. बहुत धन्यवाद थैंक यू माता जी Thank you so much for the seva. हरे कृष्ण कार्यक्रम प्रभु। हरे कृष्ण आई एम ऑडिबल प्रभु जी? हरे कृष्णा। जी 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 प्रभु आप सभी भक्तों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज प्रातःकालीन नित्यम भागवतम सेवा में हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन करेंगे। आप भी साथ में हमारे गा सकते हैं। बहुत ही पवित्र सप्ताह है, भगवान का आविर्भाव होने ही वाला है, तो हम सब भगवान की प्रसन्नता के लिए उनके आगमन का इंतजार करते हुए आज का कीर्तन उनको समर्पित करेंगे। हरे कृष्णा। नमो विष्णुपदाय कृष्णा पृष्ठाय वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare
श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, आप सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बहुत ही सुंदर आपने कीर्तन किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए आज के जो प्रवचन करते हैं उनको स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ धनंजय प्रभु जी का। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। जी प्रभु। प्रभु मेरा ऑडियो क्लियर है? जी जी। हरे कृष्णा। आप सभी का इस प्रातःकालीन में नित्यम भागवत सेवा के मुख्य कार्यक्रम जो भगवत कथा है उसमें आप सभी का स्वागत है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। तो आज हमारा परम सौभाग्य है कि हम श्रील प्रभुपाद के मुख्य शिष्यों में से एक इस होलिनेस भानु स्वामी महाराज का संग प्राप्त करने को मिल रहा है और उनके मुख्य वाणी से हमको सुनने को मिलेगा। तो वैसे तो महाराज के बारे में बहुत सारी चीजें बात करने में, लेकिन समय के अभाव के कारण और लेकिन अपने शुद्धि के लिए मैं उनके बारे में कुछ शब्द कहना चाहता हूँ। तो हिज होलिनेस भानु स्वामी महाराज ने कनाडा में जन्म लिया था और फिर उन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स की थी यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया से, और फिर वे 1970 में हरे कृष्णा आंदोलन से जुड़े और उसके एक साल बाद 1971 में ही वे श्रील प्रभुपाद से उन्हें दीक्षा भी ग्रहण कर ली और उसके पश्चात 1984 में उन्होंने संन्यास आश्रम ग्रहण कर लिया था। फिर महाराज जी को खुद श्रील प्रभुपाद के द्वारा अर्चा विग्रह की विधि के बारे में पर्सनली आदेश मिला हुआ है। तो इसके लिए वे मतलब एक इस्कॉन में भी वे खुद इस अर्चा विग्रह सेवा में वे एक बहुत अथॉरिटी है। महाराज जी 2003 से जीबीसी मेंबर रह चुके हैं और वे साउथ इंडिया में, चेन्नई में और दूसरी जगहों पे साउथ इंडिया के अंदर वे प्रचार कार्य देखते हैं और वो जापान में भी को जीबीसी है जहाँ पर वहां पर भी वे प्रचार कार्य में जुड़े हुए हैं और मदद कर रहे हैं। उनकी बंगाली और संस्कृत में प्रवीणता है और उन्होंने करीब 150 से ज्यादा गौड़ीय वैष्णव पत्रों का वितरण किया है। इनमें से ज्यादातर तो भगवत गीता, ईशोपनिषद और श्रीमद् भागवतम पे टिप्पणी की टिप्पणी के गौड़ीय वैष्णवस की टिप्पणी का इन्हें वितरण किया है। और महाराज जी ने अलग अलग क्षेत्रों में भी उपलब्धियां किया है, जिनमें से कुछ है मार्शल आर्ट्स, रेकी हीलिंग, कार्नाटिक म्यूजिक और ज्योतिष विद्या। और एक और इंटरेस्टिंग चीज मैंने भी ये भी सुनी है कि महाराज जी बहुत बलशाली भी है। मैंने सुना है कि एक समय पे महाराज 100 किलो का बेंच प्रेस कर सकते हैं थे। तो अभी हम सब महाराज को स्वागत करते हैं। हरे कृष्ण महाराज, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल obeisances. Hare Krishna, we start? Yes, Maharaj. Okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prasad Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Nityam Sri Saraswati Devi Gauravani Pracharane Navashesha Srinivani Paschatya Deshatarane Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Ashwas Gaur Bhaktivedanta. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So, today's verse is Srimad Bhagavatam, Canto 11, Chapter 5, verse 33. Jayam Sadap Paribhavagnam Abhishtadoham Chistaspadam Shivavarincinutam Sharanyam Pratyartiham Pranatapala Bhavabdipoktam Vande Maha Purushate Charanarvindam. Okay, translation. My dear Lord, you are the Mahapurusha, the Supreme Personality of Godhead, and I worship your lotus feet, which are the only eternal object of meditation. Those feet destroy the embarrassing conditions of material life and freely award the greatest desire of the soul, the attainment of pure love of Godhead. My dear Lord, your lotus feet are the shelter of all holy places.
and of all saintly authorities in the line of devotional service, and are honored by powerful demigods like Lord Shiva and Lord Brahma. My Lord, you are so kind that you willingly protect all those who simply bow down to you with respect, and thus you mercifully relieve all the distress of your servants. In conclusion, my Lord, your lotus feet are actually the suitable boat crossing over the ocean of birth and death, and therefore even Lord Brahma and Lord Shiva seek shelter at your lotus feet. Purport. The incarnation of the personality of a Godhead in Kali Yuga is described and worshipped in this verse. The state Karabhajana, after describing the incarnation of Godhead in each of the three previous yugas, Satya, Treta, and Dwarpa, presented suitable prayers which are utilized for glorifying the Lord at each particular being. After describing the Lord's manifestation in Kali Yuga with the verse Krishna Varnati Shakrishnam, this and the next verse are now presented to glorify the Lord's appearance in Kali Yuga as Chaitanya Mahaprabhu, Krishna Varnati. Chaitanya Mahaprabhu appears in Kali Yuga and teaches everyone to chant the holy name of Krishna. The members of the ISKCON movement are so much absorbed in Krishna Varnam, or chanting the holy names of Krishna, that sometimes ordinary persons refer to them as the Krishnas. Thus, whoever comes into contact with Chaitanya Mahaprabhu's movement immediately begins to worship Krishna by chanting his holy name. The words Jaya Sada, or always to be meditated upon, indicate that there are no hard and fast rules in this age for chanting the holy names of Krishna. In Kali Yuga, the authorized process of meditation is to chant the holy names of the Lord, especially the mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. This process is to be executed constantly and always, sada. Similarly, Chaitanya Mahaprabhu stated, Nam Nama Kari Bahoda, Nija Shabra Shakti Stratapita Niyamata Smaranena Kala. In Kali Yuga, the Supreme Lord has kindly invested all of his potencies in his holy name, and there are no hard and fast rules for chanting such names. The mention of such rules refers to Kala Adesha Niyama, or regulations of time and place. Normally, there are strict regulations governing the time, season, place, conditions under which one may execute a particular Vedic ceremony or chant a particular mantra. However, one should chant the holy name of Krishna everywhere and at all times, 24 hours a day. Thus, there is no restriction in terms of time and place. This is the meaning of Chaitanya Mahaprabhu's statement. The word paribhavagnam is significant in this verse. In Kali Yuga, human society is infected with enviousness. There is great envy even among members of the same family, who constantly quarrel in this age. Similarly, neighbors are envious of each other and of each other's possessions and status. And entire nations, burning with envy, go to war unnecessarily at the risk of genocide caused by terrible modern weapons. But all of these harassments caused by family members, strangers, so-called friends who are unfaithful, opposing nations, financial competition, social disgrace, cancer, etc., can be relieved by taking shelter of the lotus feet of Chaitanya Mahaprabhu. It is not possible to save the material body, but one who takes shelter of Chaitanya Mahaprabhu loosens the hard knot of the heart that psychologically binds them to the hallucination of identifying with the external body or the subtle material mind. Once this false identification is broken, one can be blissful in any adverse material condition. Those who foolishly try to make the temporary body eternal are wasting their time and neglecting the actual process for making life permanent, which is to take shelter of the lotus feet of Chaitanya Mahaprabhu, who is Krishna himself. In this verse, the word tirthaspadam means that the lotus feet of Chaitanya Mahaprabhu are the shelter of all holy places. As the Krishna consciousness movement spreads all over the world, we often find, especially in poor third world countries, that it's very difficult for people to travel to India to visit the most exalted holy places such as Vrindavan and Mayapur.
especially in South America, it's very difficult for a large number of devotees to visit such places in India and purify themselves. But Chaitanya Mahaprabhu was so merciful that simply by worshiping him, Vaishnavas throughout the world receive the benefit of having visited the supreme holy place, namely the lotus feet of Chaitanya Mahaprabhu. Thus, there's no loss for the followers of the Krishna consciousness movement despite their external situation. In this regard, Sri Vishnu Chakravarti Thakur has stated, Kalo dravya desha kriyadi janitam durvaram apavitrayam na api na sankaniyam yati bhava. In this age, the world is so polluted by sinful life that it's very difficult to become free from all the symptoms of Kali Yuga. Still, one who is faithfully serving in the missionary work of Chaitanya Mahaprabhu need not fear occasional unavoidable symptoms of Kali Yuga. The followers of Chaitanya Mahaprabhu strictly follow the four regulator principles of no illicit sex, no intoxication, no meat eating, and no gambling. They try to chant Hare Krishna and engage in the service of the Lord. However, it may happen that by accident an occasional symptom of Kali Yuga, such as envy, anger, lust, greed, etc., may momentarily appear in the life of a devotee. But if such a devotee is actually surrendered to the lotus feet of Chaitanya Mahaprabhu, by his mercy, such an unwanted symptom or anartha will quickly disappear. Therefore, a sincere follower of the Lord should never be discouraged in execution of his prescribed duty, but should be confident that he will be protected by Chaitanya Mahaprabhu. It is also mentioned in this verse, Shiva Virinchanutam. Lord Shiva and Lord Brahma are undoubtedly the two most powerful personalities within this universe. Still, they meticulously worship the lotus feet of Chaitanya Mahaprabhu. Why? Sharanyam. Even Lord Shiva and Lord Brahma are not safe without the shelter of the lotus feet of the Lord. The words Vrityartiham Pranatapala indicate that if one simply bows down without duplicity at the lotus feet of the Lord, then the Lord will give such a sincere candidate all protection. This verse does not mention that one need to be an exalted devotee of the Lord. Rather, it is stated that if one simply bows down at the Lord's lotus feet, he will get all protection. And this also applies to anyone who is trying to serve the mission of Chaitanya Mahaprabhu. Even the neophyte will get all protection by the mercy of the Lord. In regards to the words Bhava Abdipotam, or a suitable boat for crossing the ocean of material existence, there is the following statement by Lord Brahma and other demigods in Srimad Bhagavata. Vapada potena mahatkratena kurvanti govatsapadam bhavabdim. By accepting your lotus feet as the boat by which to cross the ocean of nescience, one follows in the footsteps of the Mahajans and can cross the ocean as easily as one steps over the hoofprint of a calf. According to Srila Rupa Goswami, a follower of Chaitanya Mahaprabhu, according to Rupa Goswami, a follower of Chaitanya Mahaprabhu is Jivan Mukta, a liberated soul. Thus, a devotee is not worried about his future destination, for he is confident that the Lord will quickly take him across the ocean of material existence. Such confidence is referred to in the Upadeshamrita by the word Nishchayat, meaning firm conviction about the potency of the process of devotional service. According to Srila Vishnu Chakravarti Thakur, the statement Shiva Virinchi Nutam is also understood to indicate that Chaitanya Mahaprabhu is worshipped by Lord Shiva's incarnation, Advaitacharya, and by Lord Brahma's incarnation, Haridas. Chaitanya Mahaprabhu is addressed in this verse as Mahapurusha, meaning Purushottama, Supreme Personality of Godhead. Similarly, there's reference to Mahaprabhu in the Svetasvatara Upanishad, Mahan Prabhur Vai Purusha Satyaisha Pravardanaha. The Supreme Prabhu is the personality of Godhead who is the initiator of the entire cosmos. Similarly, Lord Sri Gaura Krishna is addressed by the word Mahapurusha in this verse, and the whole intention of this verse is to offer obeisances at his lotus feet. Such lotus feet
are the actual eternal object of meditation because they cut off the bondage of material life and fulfill the desires of the devotees. Although the conditioned souls, laboring arduously under illusion, pursue many temporary goals of life, there's no possibility of achieving actual bliss or knowledge. Such eternal bliss and knowledge is actual wealth. One should not neglect the lotus feet of Chaitanya Mahaprabhu, taking him to be an ordinary person, and instead accept the temporary useless shelter offered by the illusory energy of the Lord. Those yogis who falsely select some other object of meditation besides the lotus feet of the Lord are simply creating obstructions to their own eternal life. When the meditator, the meditation, and object of meditation are all on the eternal platform of the Lord, then actual shelter has been achieved. Generally, conditioned souls are engaged in bhogatyaga. Sometimes they run madly after material prestige, sense gratification, and sometimes they desperately try to renounce these things. However, beyond this vicious cycle of alternating sense gratification and renunciation are the lotus feet of the Lord, which constitute the ultimate abode of peace and happiness for the living entity. The following are additional notes in this verse by Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Jayam, the object indicated by the word Dhimahi in the Gayatri mantra. Tirthaspadam, the original shelter of holy places headed by Golakshetra and Vrajamandala, or the original shelter, namely the lotus feet of the Lord, of the great devotees of the Brahma Sampradaya, following the succession of faithful hearing. The succession of faithful hearing begins with Srimad Ananta Tirtha Madhvacharya and is continued by the Rupa Nuga Bhagavatas, the highly elevated followers of Rupa Goswami and Chaitanya Mahaprabhu. Shiva Virinshanutam, he who is worshipped by the incarnation of Lord Shiva. Srimad Advaitacharya Prabhu, and by the incarnation of Lord Varinshi, Srimad Haridas Prabhu. Britya Artama, he who destroyed by his causeless mercy the misery of his own servant, the Brahmana Vasudev, who was afflicted with leprosy at Chaitanya Lila. Bhavabdi Bhotam, the means of crossing over the ocean of samsara, or the shelter of those who are freeing themselves from material existence, which afflicts the living entity in the form of hankering for liberation or material enjoyment. Such persons who took advantage of this transcendental boat of the Lord's lotus feet are Sarvabhauma Bhattacharya, who was saved from mukti kama, or desire for liberation, and Prataparudra Maharaj, who was saved from mukti kama, or desire for material opulence. Okay, is that it? Okay, Hare Krishna. So this is a long purport. This is a verse, as explained in the purport. This is one of two verses, which are quite famous, which are prayers to offer to the incarnation of Kali Yuga. In this chapter, we need a translation or not? Yes, Maharaj, we have a translation in Hindi. Hare Krishna, Gokul Chandra Prabhu. Hare Krishna, Danut Pranam. Maharaj, please accept my humble obeisances and please bless me so I can serve you without any interruption. Hare Krishna. Okay, so this is the first of two verses in praise of for meditation upon the incarnation of the Yuga avatar in Kali Yuga. ये कलयुग के तारण के लिए जो दो श्लोक हैं, उनमें से एक पर हम अभी चर्चा करेंगे. In this chapter, previously the incarnations, the Yuga avatars for the different yugas were explained. इससे पूर्व का जो श्लोक है, इसमें जो पूर्व युगों के अवतार हैं, उनका वर्णन किया गया है. And each explanation also had some prayers for each of those Yuga avatars. और उनके साथ साथ उन सभी युग अवतारों की प्रार्थनाएं और स्तुतियां भी हैं. So now we have some prayers for the incarnation in Kali Yuga.
और अब जो है वो कलयुग के अवतार की कुछ स्तुतियां हो रही हैं. So it was previously explained that incarnation in Kali Yuga is golden in color and chants the holy name. और इस कलयुग के अवतार जो है वो गौर वर्ण के हैं और वो संकीर्तन करते हैं. And of course, we should worship the Yuga avatar. और हमें इस युग अवतार की आराधना करनी चाहिए. So here are two verses to help us in that worship. और इन श्लोकों के द्वारा हम उस आराधना को कर सकते हैं, उसकी सहायता होती है. This is also a form of kirtan. ये भी एक प्रकार का कीर्तन है. Kirtan literally means glorification. कीर्तन का अर्थ होता है स्तुति करना. Usually we think of kirtan, it's nam kirtan. We're glorifying the Lord by uttering his name. वैसे हम समझते हैं कि कीर्तन जो है वो भगवान के नाम उच्चारण को कहते हैं. But we can also glorify the Lord by reciting verses. लेकिन हम भगवान की स्तुति इस प्रकार के श्लोकों को पढ़कर भी कर सकते हैं. And we see this is often done by Devatas. They will offer prayers to the Lord, and great devotees like Kunti will offer verses to the Lord. So these are also a type of kirtan. हम देखते हैं कि कई बार देवता जो हैं और महाभक्त जो हैं कुंती की तरह वो भी भगवान की स्तुति इन श्लोकों के द्वारा करते हैं. And we see Gajendra offers prayers to the Lord. और हम ये देखते हैं कि गजेंद्र भी भगवान की स्तुति ये श्लोक उच्चारण करके करते हैं. So in this way, throughout the Bhagavata, we'll find this type of kirtan, offering of prayers. इस तरह हम पूरे भागवतम में देखते हैं अलग अलग जगहों पर भगवान की स्तुति इन श्लोकों द्वारा की जाती है. And the Lord is pleased by such prayers. और भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं इस प्रकार की प्रार्थनाओं से. So this is the type of worship of the Lord. तो ये भी भगवान की आराधना का एक प्रकार है. So these verses provide not only opportunity for worship, but they also give some description of the Lord. ये श्लोक जो है ये न केवल हमें भगवान की स्तुति में सहायता करते हैं, लेकिन भगवान के कई गुणों का भी वर्णन हमें इससे समझ में आता है. If we are to glorify the Lord, we have to glorify his qualities or his activities. अगर हम भगवान की स्तुति करते हैं तो हमें भगवान के गुणों की और उनके भक्तों की हमें स्तुति करनी चाहिए. And by glorifying those activities and qualities, we get to understand more about that particular form of the Lord. और भगवान के लीलाओं की और गुणों का हम स्तुति करने से हम उस विशेष रूप को समझने में हमारी सहायता होती है. So these particular verses are offering respects. और ये श्लोक जो है भगवान को आदर और ये प्रस्तुत करते हैं. So in the last line here it says, "One day I offer respects to who? To Mahapurusha, our Charna Arvinda, the lotus feet of the Mahapurusha." और ये जो श्लोक है इसमें हम महापुरुष के चरणारविंद की स्तुति करते हैं. So Mahapurusha doesn't say Mahapurusha, doesn't say Lord Chaitanya, but by this, when we say Mahapurusha, we give this as an indication of Mahaprabhu Lord Chaitanya. जब हम महापुरुष कहते हैं तो वह इस प्रकार का संकेत करता है कि हम चैतन्य महाप्रभु के विषय में बोल रहे हैं. Of course, we can take all the different descriptions of this verse, we can apply them to other forms of the Lord as well. और इस श्लोक के जो गुण हैं उनको लेकर हम अन्य अवतारों से भी उनको जोड़ सकते हैं. Because they are, we can say, general descriptions. क्योंकि ये सार्वभौम विवरण है भगवान की. For instance, Jayam Sada, which means those lotus feet are worthy of meditation at all times. जैसे जयम सराह का अर्थ है कि उन चरणों की हम आराधना करें जो सदैव मुक्ति प्रदान करते हैं.
So this description applies to all forms of the Lord. We can meditate on any lotus feet of any form of the Lord, and it's always wonderful, beneficial. और इस प्रकार हम जैसे इन चरण अरविंदों का की स्तुति करते हैं वो सभी अवतारों के लिए लागू होता है. And similarly, Paribhava Gnam, it destroys all the obstacles and whatever, or the threats in Kali Yuga. और जैसे परिभव ज्ञान है उसका अर्थ है वो कलयुग के सारे विघ्नों को और कल्मशों का नाश करता है. So all forms of the Lord, if we worship the lotus feet, then they will destroy these obstacles also. उसी प्रकार सभी अवतारों की ऐसी स्तुति करने से वो सब इस विघ्नों का नाश कर सकते हैं. And similarly, Abhishtadoham, these lotus feet bestow all desires. और उसी प्रकार अभिष्टदोहम का अर्थ होता है वो सारी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं. So if we worship any form of the Lord, yes, all of our desires are fulfilled. हाँ, किसी भी भगवान के किसी भी स्वरूप का आराधना करें तो हमारी सारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी. Yeah, so in this way we can take all of the different phrases, and they can apply not only to Chaitanya Mahaprabhu but other forms of the Lord as well. इस प्रकार इस श्लोक के अन्य जो वाक्य हैं उनको लेकर हम चैतन्य महाप्रभु के साथ भी और अन्य अवतारों से भी इनको जोड़ सकते हैं. However, the previous verses were describing the avatar in Kali Yuga, the one who does kirtan. और उसी प्रकार हम कह रहे हैं कि जो पूर्व युगों के अवतार हैं वो संकीर्तन करते हैं. And we accept that description as applying most suitably to Chaitanya Mahaprabhu. और ये विशेषकर चैतन्य महाप्रभु का वर्णन करने के लिए उपयुक्त है. Of course, there are other avatars in Kali Yuga like Buddha and Kalki, but those descriptions are different. They are not Yuga avatars. वहाँ कलयुग में बुद्ध और कल्कि के अवतारों का वर्णन भी है, लेकिन वो इसमें उपयुक्त नहीं होता है. So therefore, we accept that the Yuga avatar is Chaitanya Mahaprabhu. इसलिए हम इस युग अवतार को चैतन्य महाप्रभु करके मानते हैं. So that verse, Krishna Varnati Shah Krishnam, we take that as Chaitanya Mahaprabhu. तो ये जो है त्रिषा कृष्णम वाला जो श्लोक है उसको हम श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए स्वीकार करते हैं. Of course, the nature of Sanskrit language is such you can take that verse and you can apply it to other forms of the Lord as well if you so desire. लेकिन अगर हमारी इच्छा हो तो संस्कृत भाषा की सहायता से हम इस श्लोक को लेकर अन्य अवतारों के लिए भी उसका हम उपयोग कर सकते हैं. But our acharyas give the meaning as Chaitanya Mahaprabhu. किंतु हमारे आचार्यों ने इसका तात्पर्य श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए दिया है. And similarly, we take this verse as applying or describing Chaitanya Mahaprabhu. और इसी प्रकार हम इस श्लोक को लेकर श्री चैतन्य महाप्रभु का वर्णन स्वीकार करते हैं. So when we say the word Mahapurusha and addressed to the great Lord, then we say this refers to Mahaprabhu Lord Chaitanya. तो उसी प्रकार जब हम महापुरुष कहते हैं यानी कि जो महाविभूति है उसे हम चैतन्य महाप्रभु के लिए स्वीकार करते हैं. And we see at the end of the purport there, Bhakti Siddhanta Saraswati has given his meanings to those different phrases. तो इसी प्रकार इस तात्पर्य के अंत में हम देखते हैं कि श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने इन्हीं शब्दों के अपने प्रकार से उन्होंने उनका वर्णन किया है अपने शब्दों में. And he applies them to Chaitanya Mahaprabhu and his followers. और वो इन श्लोकों का जो ध्येय है वो चैतन्य महाप्रभु और उनके अनुयायियों के लिए करते हैं. So, for instance, we find the word Shiva Virinchi Nutam, that those lotus feet are worshipped by Shiva and Brahma. तो जो शिव विरिंची का जो श्लोक है उसको भक्ति सिद्धांत सरस्वती बताते हैं कि ये कृष्ण शिव और ब्रह्मा जी इन चरणों की स्तुति कर रहे हैं. So, in Lord Chaitanya's pastimes, Shiva becomes Advaitacharya.
तो चैतन्य महाप्रभु की लीला में भगवान शिव जो है वो श्री अद्वैत आचार्य के रूप में प्रकट होते हैं, and Brahma becomes Haridas Thakur. और ब्रह्मा जी जो है वो शिला हरिदास ठाकुर के रूप में अवतरित होते हैं। So therefore, this phrase, Bhaktisiddhanta Saraswati takes this phrase as the lotus feet of Lord Chaitanya are worshipped by Advaita Acharya and Haridas Thakur. और इसी प्रकार शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती इस श्लोक का तात्पर्य बताते हैं कि वो इनको शिव और ब्रह्मा जो है वो इन चरणारविंदों की स्तुति करते हैं। Yeah. So that's one phrase. Another is Britya Artiham, one who destroys the pain of his servant. तो वो दूसरा जो वाक्य है जो कहता है कि वो अपने जो भक्त हैं, उनके जो दास हैं, उनके दुख का नाश करते हैं। Of course, Lord Chaitanya destroyed the pain of many persons, but one example is the leper, Vasudev. चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सारे लोगों के दुख को दूर किया, लेकिन यहाँ विशेष वर्णन उस कुष्ठ रोगी वासुदेव के लिए हो रहा है। So Chaitanya Mahaprabhu, by his mercy, cured him of his leprosy. और चैतन्य महाप्रभु ने अपनी कृपा से उसके कुष्ठ रोग को दूर किया। So this again is it's a general description, but it can also refer to Lord Chaitanya delivering persons like Vasudev. ये सर्वसाधारण वर्णन भी है और उसको हम विशेषकर वासुदेव के उद्धार के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं। And then the word Bhavabipotam, which literally means a boat for crossing over the ocean of material existence. उसी प्रकार जो भवपोतम है वो ऐसी नाव जो हमें इस भवसागर से पार ले जा सकती है। And of course, Lord Chaitanya delivered so many people. और चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सारे लोगों का उद्धार किया। But Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur points out the example of Sarvabhauma Bhattacharya. लेकिन विशेषकर यहाँ श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर सार्वभौम भट्टाचार्य का उदाहरण दे रहे हैं। And also Prataparudra. और जो महाराज प्रताप रुद्र के लिए भी कहते हैं। So Sarvabhauma Bhattacharya was absorbed in impersonal meditation and jnana. सार्वभौम भट्टाचार्य जो है वो भगवान के निर्गुण निराकार स्वरूप पर ध्यान करते थे, उस पर विश्वास करते थे। He was very knowledgeable, but he surrendered to the lotus feet of Lord Chaitanya and became a devotee. वो बहुत बड़े ज्ञानी थे, लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु के चरणों में शरणागत हो गए और बहुत बड़े भक्त बने। So in other words, Lord Chaitanya rescued him from the path of liberation and placed him in the path of bhakti yoga. और श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें मुक्ति के मार्ग से हटाकर भक्ति के मार्ग पर लगा दिया। Maharaj Prataparudra was the king of Orissa. महाराज प्रताप रुद्र उड़ीसा के महाराज थे। But Chaitanya Mahaprabhu gave him mercy, and he was delivered from the ocean of material enjoyment. और श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन पर कृपा करके उन्हें इस भवसागर से पार कर दिए। So though these words can apply generally, we can also apply them to the pastimes of Chaitanya Mahaprabhu. तो ये श्लोक जो है ये भगवान के सार्वभौम वर्णन को भी करते हैं, लेकिन हम उन्हें विशेषकर चैतन्य महाप्रभु की लीला के लिए उपयोग करते हैं। The first word, Jaya, means the object of meditation. जो पहला शब्द है जयम, वो भगवान के ऊपर ध्यान करने का संकेत करता है। So Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur takes this as a reference to the word Dhimahi, which also means we meditate, which is found in the Gayatri Mantra. तो श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती इसी शब्द का धीमहि के रूप में इसे स्वीकार करते हैं, जो कि गायत्री मंत्र का भी एक भाग है। So the Gayatri Mantra is the essence of all the Vedas. गायत्री मंत्र जो है वो सभी वेदों का सार है। And it indicates the object of worship, the object of meditation. और वो
हमारे साधना का जो विषय है उसकी ओर संकेत करता है. So, of course, different scholars and persons will interpret this Gayatri mantra in many ways. जो विभिन्न आचार्य हैं और जो ज्ञानी हैं उन्होंने इस गायत्री मंत्र के कई सारे अर्थ निकाले हैं. Some will take it as meditation on Surya, the sun god. कुछ लोग जो है इसका अर्थ लेते हैं सूर्य भगवान की तपस्या करने के लिए. Some will take it as meditation on Shiva. कुछ शिव जी की आराधना के लिए इसका उपयोग करते हैं. Some will take it as meditation on Brahma. और कुछ ब्रह्म की आराधना के लिए इसका उपयोग करते हैं. And some will take it as meditation on Vishnu. और कुछ जो है वो भगवान विष्णु की आराधना के लिए इस मंत्र का उपयोग करते हैं. So here Bhaktisiddhanta is saying actually it's meditation on Chaitanya Mahaprabhu, the Gayatri mantra. तो यहाँ श्री भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर संकेत करते हैं कि ये श्री चैतन्य महाप्रभु का ध्यान करने योग्य मंत्र है. So in other words, the essence of the Vedas is ultimately Chaitanya Mahaprabhu. दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वेदों का सार यही है कि हमें चैतन्य महाप्रभु की आराधना करनी चाहिए. And of course, we also know that Chaitanya Mahaprabhu is non-different from Krishna. और हम ये भी जानते हैं कि भगवान कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु अभिन्न हैं. And Srimad Bhagavatam is the, we can say, the essence of the Vedas. और श्रीमद् भागवत पुराण जो है वो सभी वेदों का सार है. And Srimad Bhagavatam concludes that Krishna is the ultimate object of worship and the object of meditation. और श्रीमद् भागवतम अंत में यही निर्णय देता है कि भगवान कृष्ण जो है वो ही सभी आराधनाओं और भक्ति का विषय है. So in this way, this particular prayer therefore is a means of meditating upon Chaitanya Mahaprabhu. तो अंततोगत्वा ये प्रार्थना यही संकेत करती है कि हमें चैतन्य महाप्रभु की आराधना करनी चाहिए. So in this way, we have this verse and the next verse, and our acharyas comment on these verses to indicate Chaitanya Mahaprabhu. और इसी श्लोक को और आगे के कुछ श्लोकों का संकेत आचार्य यही लेते हैं कि हमें चैतन्य महाप्रभु की आराधना करनी चाहिए. Well, of course, this is not the only place we have indications of Chaitanya Mahaprabhu. लेकिन ये सिर्फ यही एक स्थान नहीं है जहाँ पर हमें चैतन्य महाप्रभु की ओर संकेत मिलता है. We see in the Gargamuni's description of Krishna, we find a mention of the Pita avatar or the golden avatar. इसी प्रकार हम देखते हैं गर्गमुनि जो है जब भगवान का वर्णन करते हैं तो उसमें वो पीत वर्ण यानी सुनहरे अवतार के विषय में वो बताते हैं. So our acharyas also comment on that verse and they say this indicates Chaitanya Mahaprabhu. और कई आचार्यों ने इस पर टीका करते हुए कहा है कि ये संकेत जो है ये चैतन्य महाप्रभु के लिए है. Of course, there's other avatars in Kali Yuga, there's Buddha and Kalki, but they're not golden. हाँ, बुद्ध और कल्कि भी कलयुग के अवतार हैं लेकिन वे सुनहरे नहीं. So we have these verses here, and we have the statement of Gargamuni, and then we have other Puranas, and of course we have Vishnu Sahasranam that gives some descriptions of the Lord as well, Chaitanya Mahaprabhu. श्रीमद् भागवतम में के ये कई श्लोक भी हैं और कई अन्य पुराणों में भी और विष्णु सहस्त्रनाम में भी श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतरण का संकेत होता है. So these are the explanations given by our acharyas. और ये हमारे आचार्यों द्वारा दी हुई कुछ वर्णन है. If we go to other sampradayas or other commentaries, we'll find other explanations as well. अगर हम अन्य संप्रदायों और अन्य दर्शनों में जाएंगे तो हमें इन श्लोकों के अन्य अर्थ मिलेंगे. But of course, we're still left with the problem: who is that Yuga avatar? तो अंत में फिर भी यही अड़चन रहेगी कि ये युग अवतार कौन है.
and nobody's ready to give a name of a particular person. और कोई भी एक व्यक्ति विशेष का नाम देने से इनकार करते हैं. But we identify that person directly as Chaitanya Mahaprabhu. और ये हम इससे चैतन्य महाप्रभु का संकेत लेते हैं अप्रेक्षित दृष्टि से. Okay. Hare Krishna. हरे कृष्ण. Any question there? कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा, किसी का कोई प्रश्न है? Hare Krishna Maharaj, I had a question from my end. Yes. Maharaj, you were mentioning about the holy name, how when we glorify the Lord, at that time, basically doing kirtan, so we are able to even apply this to different forms of the Lord. So does this also include, for example, if someone's doing to a demigod, so indirectly they are even offering to the Lord, glorifying the Lord indirectly. Okay. F translation, Gokul Chandra Prabhu. ये प्रश्न इनका ये है कि ये महाराज ने जो संकेत किया यहाँ पर कि हम भगवान की स्तुति करते हैं तो अप्रेक्षित दृष्टि से हम अन्य अवतारों की भी करते हैं, तो क्या हम देवी देवताओं की स्तुति करेंगे तो भी क्या वो अप्रत्यक्ष दृष्टि से भगवान की ही स्तुति है क्या? So some prayers may be very particular, and therefore they are identified with a particular form of the Lord or with a particular devata. कोई स्तुतियां जो हैं वो किसी देवता विशेष के ओर संकेत करती हैं और कुछ जो है वो भगवान का संकेत करती हैं. So we may have a prayer to Ganesh. So it'll mention the elephant head, his trunk, and his complexion, and holding a laddu in his hand, and his vahana is the mouse, the rat. So it's obviously Ganesh, and we can't apply that to anybody else. वैसे कोई स्तुति है जिसमें श्री गणेश जी की स्तुति है, तो उसमें वो बताते हैं कि उनका जो मस्तक है वो गज का है, हाथ में लड्डू है और उनका वाहन जो है वो मूषिक है. तो हम उसका उपयोग किसी भगवान के स्वरूप के लिए नहीं कर सकते. Now, of course, all the devatas are servants of the Lord, so we can always respect them. जो देवता हैं वो सब भगवान के अनुयायी और उनके दास हैं, तो हम उन्हें उनका सम्मान करना चाहिए. And in fact, in Nectar Devotion, it is said, it is no offense if we don't respect the devatas. और भक्ति रसामृत सिंधु में संकेत है कि देवताओं का अपमान करना एक बहुत बड़ा अपराध है. So they're also Vaishnavas, they're also devotees. और वो भी वैष्णव हैं, वो भी भक्त हैं भगवान के. At the same time, we do have the other offense that don't consider the names of Shiva and Brahma to be equal or independent in the name of Lord Vishnu. लेकिन ये भी एक अपराध है कि अगर हम भगवान श्री विष्णु की तुलना अन्य देवताओं से करते हैं और उन्हें उनके समान समझते हैं, समकक्ष समझते हैं. Yeah, so we should never mistake the devatas for the Supreme Lord. इसलिए हमें भगवान को और देवताओं के जो स्तर है उसको कभी गलती से एक नहीं मानना चाहिए. Similarly, we will offer prayers to Guru and to Rupa Goswami and others, but we can never identify them as Supreme Lord. जैसे हम गुरु की, रूप गोस्वामी, अन्य भक्तों की हम स्तुति करते हैं, तो हम कभी ये नहीं समझते हैं कि वो भक्त जो हैं वो भगवान. So if the devotee offers prayers to Ganesh or Shiva or Durga or anyone, understanding they're only servants, that is permissible. अगर हम इस भाव से अन्य देवी देवताओं की स्तुति करते हैं कि वो भगवान के दास हैं, उनके अनुयायी हैं, तो उसमें कोई अपराध नहीं है. Others, however, worship Shiva or Ganesh or Durga as supreme without seeing them as servants of Vishnu or Krishna. So that's not proper. कुछ लोग जो हैं वो शिव जी को, देवी को, गणपति को वो भगवान के समतुल्य मानते हैं,
वो नहीं हो सकता है, उन्हें उनके भक्त के रूप में ही मानना चाहिए. Yeah. So if a person who's a worshiper of devatas offers his prayers, is that not proper? If we offer the prayers, understanding those persons as devatas or servants of the Lord, that is fine. अगर हम किसी देवता की स्तुति उनकी स्थिति को समझकर करते हैं कि ये भगवान के भक्त हैं, भगवान के दास हैं, तो उसमें कोई अपराध नहीं है. As we glorify the Lord, we can also glorify the devotees. जैसे हम भगवान की स्तुति करते हैं, वैसे हम उनके भक्तों की भी स्तुति कर सकते हैं. In the Brahma Samhita, then we have, of course, Brahma offering prayers to Govinda. ब्रह्म संहिता में श्री ब्रह्मा जी जो है वो गोविंद की प्रार्थना करते हैं. And then he connects all the different devatas like Durga and Shiva and Ganesh and Surya as worshippers of the lotus feet of Govinda. और वो ब्रह्म संहिता में संकेत करते हैं कि शिव जी, देवी, गणपति, सूर्य इत्यादि जो है वो सभी उस गोविंद की स्तुति करते हैं. Hare Krishna. Thank you, Maharaj. It's clear. धन्यवाद. अगर और किसी का कोई प्रश्न है तो आप अनम्यूट कर सकते हैं. Hare Krishna Maharaj, Dandot Pranam. Maharaj, as you mentioned, like as per Acharyas, the Gayatri Mantra is like meditating on Lord Chaitanya. So normally we listen that we cannot chant loudly the Gayatri Mantra. So can you? Hare Krishna. So what's the question? So if it is like we are meditating on Lord Chaitanya, so why cannot be we chant like loudly the Gayatri Mantra? Normally we hear that we cannot chant loudly the Gayatri Mantra. Yeah. यहाँ इनका प्रश्न ये है कि यदि जैसे कि महाराज ने कहा कि गायत्री जो है ये भगवान चैतन्य महाप्रभु की स्तुति है, लेकिन गायत्री का उच्चारण ऊंचे स्वर में करना वर्जित है, तो ये हम कैसे कर सकते हैं? Yeah. So certain mantras and prayers are not for kirtan. They are only for meditation or private recitation. कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जिनका जप जो है वो ऊंचे स्वर में नहीं किया जाता है और वो केवल भगवान के ऊपर ध्यान करने के लिए होते हैं. So Vedic mantras are quite restricted. तो वैदिक मंत्र जो है वो इस प्रकार से मर्यादित होते हैं. If you're a Sudra or Malacha, you cannot hear or utter the Vedas. अगर आप शूद्र हैं या म्लेच्छ हैं तो आप वेद मंत्रों को सुन या उच्चारण नहीं कर सकते. So the Gayatri mantra is from the Vedas. So technically, it's only for the upper varnas, and they have to safeguard that. They don't give it publicly to other people. इसी प्रकार गायत्री जो है ये एक वेद मंत्र है, इसलिए जो द्विज हैं वो ही इसका उच्चारण करने के अधिकारी होते हैं, वो सभी को कीर्तन के रूप में नहीं दिया जा सकता. Now, non-Vedic mantras, let's say Puranic things, Mahabharata, Itihasa, Pancharatric mantras, they're not bound by Varna rules at all. You don't have to be a Brahmin or whatever to chant those mantras or hear the mantras. It's open for everybody. जो पुराणों में और इतिहासों में या जो जैसे पंचरात्र विधि में जो मंत्र दिए गए हैं वो जो है वो इन मर्यादाओं से बांधे नहीं होते हैं, इसलिए उनका उच्चारण कोई भी कर सकता है. So anyone can hear or chant Bhagavad Gita or Bhagavata. इसीलिए कोई भी भगवद गीता या श्रीमद् भागवतम के श्लोकों का उच्चारण सुन भी सकता है और वो उनको कह भी सकता है. However, in Pancharatras, certain mantras are also not to be heard. They're not kirtan mantras. उसी प्रकार पंचरात्र विधि में कई ऐसे मंत्र हैं
जिनका उच्चारण ऊंचे स्वर में करना वर्जित है। These are the mantras you get at Diksha. ये दीक्षा के समय ही प्रदान किए जाते हैं। See, we get Krishna mantra and Gauranga mantra. We do not do kirtan of those mantras. It's only for our meditation and worship, deity worship. और जैसे कृष्ण और गौर मंत्र हमें दीक्षा के समय मिलते हैं, वो कीर्तन के लिए नहीं होते हैं, केवल व्यक्तिगत आराधना के लिए होते हैं। However, we can do chanting of the name of Krishna public. बट लेकिन हम कृष्ण का जो नाम है वो सर्वसामान्य में कर सकते हैं। So this is more suitable for Kali Yuga. और ये अधिक उचित है कलयुग के लिए। Vedic mantras are very restricted. Even our Pancharatric mantras and Diksha, you can't give them to other people. इसी प्रकार वैदिक मंत्र और पांचरात्रिक जो दीक्षा के मंत्र हैं वो मर्यादित होते हैं, वो सबको नहीं दिए जा सकते। You can give them to other people, but then you're giving them Diksha. So they should be qualified. So it's not, if nobody's qualified, so therefore it's limited. So the only free process is name of Krishna. तो जो दीक्षा के मंत्र हैं, अगर आप किसी को दे देते हैं तो उसका अर्थ ये हुआ कि आपने उनको दीक्षा दे दी। इसीलिए उनके सुपात्रता को विचार में रखते हुए ही उनको ये मंत्र दिए जा सकते हैं, और केवल महामंत्र जो है ये हम सार्वजनिक रूप से इसका कीर्तन कर सकते हैं। So we can use name of Krishna in kirtan. We can also use it for our meditation and japa. उसी प्रकार हम भगवान कृष्ण का नाम सार्वजनिक कीर्तन में भी कर सकते हैं और अपने व्यक्तिगत ध्यान आराधना में भी उसका उपयोग कर सकते हैं। And it does not require initiation to chant or hear. और उसके लिए दीक्षा की आवश्यकता नहीं है उसका नाम जप करने और उच्चारण के लिए। Does that answer your question? जी महाराज, थैंक यू। और किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। मैं हिंदी में ही पूछूंगी। जैसे कि अभी हम लोगों के मतलब हम लोगों को समझ में आता है ये सब सुनने के बाद, भागवतम की क्लासेस भक्तों के संग में आने के बाद, कि भगवान श्री कृष्ण परम भगवान है। हम लोगों ने भी कभी मतलब डेमीगॉड्स की वर्शिप की है, तो क्या हम ऐसे समझ सकते हैं कि उनके ही आशीर्वाद से हम लोग मतलब यहाँ तक आए कि हम लोग समझ पा रहे हैं अभी कि कृष्ण ही परम भगवान है? और मतलब हम तो समझ रहे हैं, लेकिन हमारे क्लोज रिलेटिव्स, क्लोज फ्रेंड्स को जब कुछ मतलब ऐसे बोलने जाए तो वो लोग, अरे यार वो तो सारे भगवान एक ही होते हैं, उसमें क्या है, किसी का भी मन से श्रद्धा रख के पूजा करो, बस उसको ही काफी है। तो मतलब उसको हम उनको हमें ऐसे मतलब जबरदस्ती समझाने की कोशिश करनी चाहिए या नहीं? मतलब वहीं पे ठीक है, वो जिसमें कर रहे हैं वही ठीक है, ऐसे करके छोड़ देना चाहिए। मीन्स इवन माय क्लोज रिलेटिव, माय मदर, माय पेरेंट्स, समटाइम्स दे आल्सो वर्शिप डेमीगॉड्स, बट उनको भी मतलब बोलती हूँ तो वो भगवत गीता ये सब श्लोक पढ़ते हैं, लेकिन ये समझने की कोशिश नहीं करते हैं। तो ये सब हम कैसे समझे, अपने मतलब अपने आप को कैसे समझाए? A long question. So Maharaj, basically the question was, there are two parts. There are two questions actually. So one, she's asking that, so when we like previously, before worshipping the Lord or before coming to ISKCON, we used to worship the demigods. So is it that because we were worshipping the demigods, because the demigods are devotees of the Lord, so we were able to, because of their mercy, we were able to get to the Lord? And then the second question was that we have many relatives and family members who are just worshipping the demigods, and it's very hard to get them convinced. Although they read Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam, but they are still not able to get to the mindset that we have to, worship Lord Krishna. So how do we convince them, or and is it fine if we like if we force them? If we don't, should we force them, or how should we go about that?
Okay. Mata, Yeah. Okay. So the cause of devotion is association of devotees. भक्ति का प्राप्ति जो है वो केवल भक्तों के संग से हो सकता है. If we worship devatas, we can worship them in different ways. हम देवताओं की विभिन्न प्रकारों से आराधना कर सकते हैं. If we simply worship them as supreme, then that doesn't lead to bhakti. लेकिन अगर हम देवताओं को ही परब्रह्म मानते हैं तो हमें भक्ति की ओर नहीं ले जा सकता. Other persons will worship them simply out of custom without any particular belief in what their position is. कुछ लोग जो हैं वो देवताओं की आराधना केवल परंपरा के कारण करते हैं, उनका कोई ध्येय नहीं होता. So nothing wrong with that, and it's purifying. इसमें कोई गलती नहीं है और वो हमारा शुद्धिकरण करता है. But in itself, it also doesn't lead to bhakti. लेकिन अपने आप में उसमें वो क्षमता नहीं है कि वो हमें भक्ति की ओर ले जा सके. If somehow or other such a worshipper gets association of devotees, then they may be willing to change their ideas. लेकिन ये न कहने प्रकार अगर वो किसी भक्त का संग करते हैं तो उनकी जो धारणा है, मनोधारणा है, उसमें परिवर्तन आ सकता है. As she mentioned, some people, you talk to them, you give them Bhagavad Gita, they read it, still they don't accept. और जैसा कि माता जी ने कहा कि कई लोग भगवत गीता पढ़ते हैं लेकिन उसके तात्पर्य को स्वीकार नहीं करते. But nevertheless, she accepted. लेकिन उन माता जी ने स्वीकार कर लिया. So what was the cause of that? तो उसका कारण क्या था? So the usual explanation is that in previous lifetimes, they got mercy from devotees. तो इसका यही अर्थ है कि पूर्व जन्मों में उनको किसी भक्त की आशीर्वाद की प्राप्ति हुई है. Maybe they got prasadam. शायद उन्हें प्रसाद मिल गया होगा. Maybe they heard a kirtan. या उन्होंने कीर्तन सुना होगा. Or maybe they heard a Bhagavatam lecture. या उन्होंने भागवतम का प्रवचन सुना होगा. So all of these things will help to give us faith or shraddha. So when we do hear Bhagavad Gita or Bhagavatam, then we will accept it. उसी प्रकार हमें इन कृपाओं की वजह से हमें श्रद्धा या विश्वास की प्राप्ति होती है और जब हम इन ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तो हमारी श्रद्धा दृढ़ हो जाती है. So we have one offense: do not preach to the faithless people. इसलिए ये एक अपराध का एक ये है कि हमें जो लोग विश्वास नहीं करते उनको प्रवचन नहीं करना चाहिए. So if we give Bhagavad Gita to the relatives, they don't want to accept it, we cannot really force them after that point. Otherwise, we commit offense, aparad. इसीलिए जब हम किसी अपने रिश्तेदार को भगवत गीता या कोई ग्रंथ देते हैं तो हमें उनको आग्रह नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये एक अपराध हो जाएगा. So how can we preach to them? तो कैसे हम उन्हें प्रचार करें? So we cannot preach directly, otherwise that would be offense. हम सीधे सीधे उनको प्रचार नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक अपराध हो जाएगा. All we can do is give them prasadam, let them hear the holy name, be nice to them, and this will be their हम केवल यही तो हम केवल यही कर सकते हैं कि हम उन्हें प्रसाद दें, भगवान का नाम सुनने का अवसर दें, उनके साथ अच्छा व्यवहार करें. So in next lifetime, they will start developing some faith, perhaps. Maybe in this lifetime also. Later on, they may develop some faith, and then they'll accept. और इसी प्रकार हम उन्हें ये अवसर देते हैं कि शायद आते हुए जन्म में या इसी जन्म में उनके अंदर श्रद्धा बढ़ेगी और वो भगवत प्राप्ति के लिए अग्रसर होंगे. माता जी, आपका प्रश्न का आपको उत्तर में क्लैरिटी मिली होगी, होपफुली. Yes, Prabhu. Thank you so much. Thank you, Maharaj. Dandavata pranam. Hare Krishna. हरे कृष्णा माता जी. समय भी 8 बजने वाले. मैं हिज ग्रेस परमानंद कृष्ण प्रभु और जय गोविंद प्रभु को आमंत्रित करना चाहूंगा और कुछ शब्द अगर वे बताना चाहे. हरे कृष्ण.
Maharaj, I think so. That's about it. Okay. So thank you very much. Jai Govind Prabhu, one. Hare Krishna Maharaj, thank you very much Okay. for coming over and enlightening us with this NBS Maharaj. On behalf of Damodar Desh, we thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna. Maharaj, with your permission, can we proceed with further announcement? I think Maharaj has left, Prabhu. We can announcements की ओर बढ़ते हैं, Prabhu ji. Yeah. So you can play that promo, Prabhu. Yeah, Hare Krishna devotees. 7 तारीख जो सितंबर गुरुवार दिन है, इट्स द जन्माष्टमी. हमारा कार्यक्रम है बरदुबाई में. शाम को 7:30 बजे से लेकर 10 बजे 11 बजे तक चलेगा. सभी भक्तों से निवेदन है वहां पर आइए. उसका अगला दिन जो है 8 सितंबर, वो दिन नंदोत्सव और शिला प्रभुपाद पे अपीयरेंस डे, वो महोत्सव भी हम लोग उधर ही मना रहा है. और जो 9 तारीख है विच इज सैटरडे और 10 तारीख संडे, ये दोनों कार्यक्रम रीजेंट इंटरनेशनल स्कूल में होने वाला है. तो 9 तारीख को शाम को 4 बजे प्रारंभ होगा और रात 10 बजे तक चलेगा. वो दिन बहुत महाअभिषेक होने वाला है वहाँ पर. और उसके साथ साथ कल्चरल प्रोग्राम्स भी है, ड्रामा है, डांस है और कीर्तन है, कथा है. और उसका अगला जो दिन है वो 10 तारीख, वो संडे दिन हम लोग जैसा ट्रेडिशनली हम लोग पुरुष सूक्ता, श्री सूक्ता और विष्णु सहस्त्र लक्षार्चना ये सब करने वाला है वहाँ पर. तो वो दिन एकादशी भी है. सभी भक्तों से निवेदन है अब ज्यादा संख्या में आइए और इस कार्यक्रम का लाभ उठाइए. और उसके साथ साथ में बहुत सारा सेवा अपॉर्चुनिटीज है. प्लीज इफ यू वांट टू do some service, please get in touch with our team. Hare Krishna. Over to Dhananjay Prabhu for prayer. हरे कृष्णा. अभी हम प्रेयर्स की ओर बढ़ते हैं. तो एक प्रेयर की रिक्वेस्ट है हिज ग्रेस मधुर प्रभु, उनके पिता विजय प्रताप जी, या विजय प्रताप जी, उनके लिए और सुभाष प्रभु के पिताजी चंद्रशेखर जी, उनके हेल्थ के लिए प्रेयर्स है ये. और कृष्ण पृष्ठा माता जी ने प्रेयर्स मांगी है रामदास के हेल्थ के लिए. और प्रतिमा कुलकर्णी माता जी प्रेयर्स मांगती है उनके बेटी प्रांजलि के लिए. और किसी की कोई प्रार्थना हिज होलीनेस जयप्रताप स्वामी महाराज के हेल्थ और अपने दामोदर देश में राधापद पंकज प्रभु, उनके भी स्वास्थ्य के लिए प्रेयर्स है. और किसी के जय गोविंद प्रभु, पूर्ण पुरुषोत्तम प्रभु, श्यामचंद्र प्रभु और सबके लिए प्रार्थना करते हैं. सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु. हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। तो आज के कार्यक्रम को हम अल्प विराम देते हैं और मिलते हैं कल ही ऐसे ही नित्यम भागवत सेवा के कार्यक्रम में। हरे कृष्णा धनंजय प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु। थैंक्स टू गोकुल चंद्र प्रभु जी फॉर वंडरफुल ट्रांसलेशन। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। तो मिलेंगे कल। तो मैं होस्ट माधवर प्रभु को रिक्वेस्ट करूंगा कि हम